जी, अस्सलाम वालेकुम students. Let's start our topic for today, that is direct and indirect speech. ठीक है, आज हम क्या करेंगे? We are going to do the rules of direct, like how you convert a direct speech into indirect speech. But before going into the detail of the rules and all the things that you need to keep in mind, first we are going to clear the concept of what a direct and indirect speech is. So both these terms, whether it is direct speech or indirect speech, both these words are related to reporting. Okay, reporting से ये related है, and reporting, as you know, it means when you are reporting something about someone, or you are narrating something about someone. So that is direct, and that is related to direct and indirect speech. Then there are two ways in which you report something said by someone. You either report it in a direct way, in which you quote the exact words of the speaker, or you narrate it, or you report it in an indirect way, where you make certain changes to the words of the speaker, and you then convey it indirectly. So the first case where you the first case where you convey the speech as it is said by the speaker, that is direct, and then the later case was the indirect speech, where you make changes to the speech of the speaker. So when we report the exact words of the speaker without any change, then this mode of communication is direct speech. On the other hand, when we do not report the real words of the speaker and change them, then this mode of communication is called indirect speech. So this is the basic difference between the direct and indirect speech, that we don't that indirect speech we report the exact words of the speaker, whereas in indirect speech we report them, or we report the speech indirectly by making some changes to it. Look at the example. Sarah said, "I drink black coffee every morning." Sarah said, "I drink black coffee every morning." So this is a direct speech, because whatever Sarah is saying, that has been enclosed in the marks, okay, in inverted commas में वो enclosed है, which shows that these words are the exact words as said by Sarah. इसमें कोई change नहीं हुआ. So this is direct speech. But if I want to say the same thing indirectly by making certain changes to it, so then it becomes indirect speech. Like for example, first I'll make change to the pronoun I, and I'll make it she. Then I'll make certain changes to the verb, like drink is the verb here, so I'll change the tense of the verb, and then if there is some time or place expression, उसको भी मैं थोड़ा बहुत change करके अपने words में वही सारा की बात कहूँगी. So that is the indirect speech. As for example, Sarah said that, then there is addition of that she drank coffee every morning. So in the first example is a direct speech in which the words are used as it is, as said by Sarah. ठीक है, सारा ने जिस तरह कहा है उनको exactly quote किया गया है. So that is direct speech. And in the next example, I have made certain changes to the speech, but meaning, overall जो meaning है उस sentence का वो उसी तरह का है. Meaning change नहीं हुआ, लेकिन words में कुछ changes आ गए हैं. So that is indirect speech. So direct speech and indirect speech, these are basically two ways of saying what someone else said in the past. Past में किसी ने क्या कहा है, ये आप अगर past में किसी ने कोई बात की है, तो आप basically वही बात कर रहे होते हो, लेकिन दो different तरीकों से. कि आप directly वो बात करते हो या indirectly वो बात करते हो. So this is the concept of like direct and indirect speech. All right, then there are two parts of direct and indirect speech. अगर आपके सामने एक sentence आता है, ठीक है, just previous example जो हमने use किया है, उसी example को लेते हैं. Sarah said, "I drink black coffee every morning." Now this is a direct speech. So this sentence has two parts to it. One part is the reporting speech, and the other part is the reported speech. अब reporting speech क्या होती है? वो words, reporting speech are those words like the person who is reporting the message. जो person उस message को report कर रहा है, जो person किसी और की बात बता रहा होता है, तो उस person के जो words हैं, they are reporting speech.
So reporting speech contains the words of the speaker. Now, who is the speaker? The person who is reporting the message. And then the rest of the sentence that is enclosed in the इधर तो मैंने inverted commas use किया, but you usually include them in the quotation marks. So those words that are enclosed in the quotation marks are the reported speech. So reported speech contains the words of the speaker whose message is reported. तो जिसका मैसेज रिपोर्ट किया जाता है, नरेट किया जाता है, that is the reported speech. और जो उसको नरेट कर रहा होता है वो बंदा जो words use करता है, they are reporting speech. So these are the two parts to direct and indirect speech. The first one is the reporting speech and the second one is the reported speech. Normal cases में reporting speech पहले आता है, reported speech बाद में आता है, as a जिस तरह आपको example में नजर आ रहा है. But then there are some cases जहाँ पे क्या हो सकता है कि reporting speech बाद में आ सकता है. Like it could be I drink black coffee every morning, Sarah said. तो ऐसे भी हो सकता है, बट नॉर्मली दिस इज द केस जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ज्यादातर यही होता है. So now you know what is a direct speech, now you know what is an indirect speech, and now you know about the parts of direct and indirect speech. To understand the basic concept, this is I guess quite enough. ठीक है, काफी है. So let's move towards the rules, you can say the rules or the conventions of how you can convert a direct speech into indirect speech. So there are certain rules, बहुत basic से rules है, बहुत आसान से rules है. First of all, what you do is in the direct speech where you use the quotation marks, you when you change it into the indirect speech, you remove those quotation marks and you use the word that, or if on the structure of the sentence. So it depends on the structure of the sentence, and here you decide कि आपने that use करना है or if you are using if. So that totally depends on the sentence. So this is the first thing. You remove the quotation marks and you add the word that into the sentence. Then the next rule is change pronouns. If there are certain, okay, first of all, keep this thing in mind that all the changes are made to the reported speech. ठीक है, जो आपकी reported speech होती है, सारी changes उसी में होती हैं. So if there is any kind of pronoun in the reported speech, so to convert such direct speech into indirect speech, then you are definitely making some changes to the pronouns. So once you have removed the quotation marks and you have changed the pronouns, the third step is you have to look at the tense of the sentence. आपने sentence के tense को देखना है. If it is in present, you have to backshift it. You have to change it to the past. Why? Because you are reporting something that has been said in the past. वो the past में था. This is not something about the present. This is you are talking something that happened in the past. So if the tense of the reported speech is in is present, so you have to backshift it to the past tense. Then the last step is that if there is any kind of time expression or is there kind of any place expression, so you make changes to them also. Look at the example. Okay, the example is Ben said, I have a dental appointment this evening. Now this is an example of direct speech where there is a subject Ben who is saying that I have a dental appointment this evening. So to change this sentence into indirect speech, what we are going to do is कि हमें इन rules को आप follow करना है, ठीक है? अब जब इसको हम final form indirect speech form में लिखेंगे तो quotation marks का तो आपको वहाँ से clear हो जाएगा. But let's look at the pronoun. यहाँ पे आपको pronoun नजर आ रहा है. I have a dental appointment this evening. So I is a pronoun here. So to convert this speech into indirect speech, first we are going to convert this pronoun into he. I will be changed into he. He will be replaced. He will replace I. ठीक है? I क्या हो जाएगा? He में change हो जाएगा. फिर आपने tense के tense को change करना है. Tense को देखना है कि अगर reported speech आपके present tense में आ रही है, like look at the word have. अब have is that is indicating that this sentence is in present tense. Have represents presence.
ठीक है। तो आपने इसको इसके टेंस को चेंज करना है। तो हैव क्या हो जाएगा, हैव कन्वर्ट होके हैड बन जाएगा। फिर आपने देखना है कि कोई टाइम या प्लेस एक्सप्रेशन है उस सेंटेंस में। सो आई हैव डेंटल अपॉइंटमेंट दिस इवनिंग, सो यस देयर इज अ टाइम एक्सप्रेशन। टाइम एक्सप्रेशन क्या है आपके पास, दैट इज दिस इवनिंग। सो दिस इज अ टाइम एक्सप्रेशन। तो आपने इसको भी पास्ट में कन्वर्ट कर देना है। समिंग अप होल डिस्कशन, जितने भी आपको चीजें प्रेजेंट में नजर आ रही है, आपने उन चीजों को पास्ट में कन्वर्ट करना है, direct speech into indirect speech. So here, this will changes to that. I will change to he, have will change to had, and this will changes to that. और quotation marks remove करके हमें that लगाना है। तो in the end आपका जो आपकी जो indirect speech है वो कैसे बनेगी? That is going to be just like this. Ben said that he had a dental appointment that evening. तो इसी तरह जब आप रूल्स को आपने अप्लाई किया, प्रोनाउन चेंज किया, आपने टेंस को चेंज किया, टाइम एक्सप्रेशन को चेंज किया, कोटेशन मार्क्स को रिमूव किया, सो दिस इज हाउ यू गॉट अ न्यू सेंटेंस जिसका मतलब जो है वो बिल्कुल पहले की तरह है, बट वर्ड उसमें कुछ चेंजेस आई है। एंड दैट इट बिकम्स Ben said that he had a dental appointment that evening. So now this is your indirect speech. आपने डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट किया, कोटेशन मार्क्स रिमूव किए, प्रोनाउन चेंज किया, टेंस चेंज किया, एंड देन आपने टाइम एक्सप्रेशन को चेंज किया। कोई प्लेस एक्सप्रेशन यहाँ नहीं है तो सिर्फ हमें टाइम एक्सप्रेशन नजर आ रहा है। एंड दिस इज एन ऑप्शनल, क्योंकि आपको हर जगह पे टाइम एक्सप्रेशन नजर नहीं आएगा, तो फिर उस सेंटेंसेस में ये रूल भी अप्लाई नहीं होगा। So these are the very basic rules जिससे आप किसी भी सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं। Then कुछ सेंटेंसेस पर आपके पास ऐसे आएगी जिसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है, then you will be confused कि आप इसके साथ क्या करें। So nothing to worry about, keeping the difficulties that you can face in your exam. I have tried to elaborate everything in quite detail. तो सबसे पहले तो आपको मैं आप इस एग्जांपल को दोबारा देखिए। Ben said I have a dental appointment this evening. Now अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है, what is the reporting speech here? That is Ben said. अगर आपका जो कोटेशन मार्क्स के बाहर वाला जो पोर्शन है, अगर वो पास्ट टेंस में है, said is the past tense, ठीक है। तो आपने अंदर की सारी चेंजेस अगर प्रेजेंट में है तो आपने उसको पास्ट में कन्वर्ट कर देना है। लेकिन अगर आपका जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो प्रेजेंट टेंस में है, अगर ये होता Ben says, ओके, तो आपने फिर अंदर के जो प्रेजेंट जो भी जितने भी एलिमेंट्स है जो प्रेजेंस को इंडिकेट कर रहे हैं, तो आपने उनमें चेंजेस नहीं करनी, ठीक है। इफ इट वाज Ben says तो फिर हैव हैड में चेंज नहीं होता। फिर उस सेंटेंस का जब रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में होती है तो उसकी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता, एज इट इज रहता है। But if the reporting speech is in past tense, as in this sentence, Ben said, तो फिर आप उसमें changes करते हो। I'm talking about the change of the tense, ठीक है? So if the reporting speech is in past tense, you make the changes to the sentence. If the reporting speech is in present tense, you do not make any kind of change to the sentence. So this is one thing you have to keep in your mind. यानी कि अगर इस एग्जाम्पल को मैं ट्विस्ट करके आपको बताऊं कि Ben says and then the whole sentence, तो आपने have को had में change नहीं करना। This is what I mean to say. Then there are general rules. आपको sentences का आपको sentences you know about the sentences के there are sentences about the tenses, that there is present, past and future tense, and then there are subcategories like simple present, present continuous, present perfect continuous. तो इसी तरह के आपके पास ये 4 कैटेगरीज, आप हर एक टेंस के आपके पास 4 कैटेगरीज है, ठीक है। अब अगर इन कैटेगरीज को हम देखें तो there are some categories which can be converted from direct speech into indirect speech, and then again there are some categories which cannot be changed from direct into indirect speech. What are those categories which can be changed and what are those categories which cannot be changed? Let's discuss them. Number first, सबसे पहला वाला है that is present indefinite, जिसको आप simple present भी कहते हो. So if there is
any kind of verb whose tense is like which is in simple present, so that will change into simple past. जिस तरह के अगर have है जो like okay, that is a perfect example, ठीक है, perfect example बाद में करेंगे। तो जहाँ पे आपको अगर सिंपल प्रेजेंट नजर आता है तो आपने इनडायरेक्ट स्पीच में उसको सिंपल पास्ट में कन्वर्ट करना है। if you see present continuous, you will change it into past continuous, like eating, so eaten. If you see present perfect, so you change it into past perfect. Just like in the previous example, have has been changed into had. तो present perfect से हमने उसको past perfect में change कर दिया है। And then present perfect continuous will change into past perfect continuous. Hence आपके पास जितने भी present tense वाले sentences होंगे ना जिसमें आपको present tense नजर आएगी, तो आपने indirect speech में convert करते हुए उनको सारी कैटेगरीज को आपने पास्ट में कन्वर्ट करना है। सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट में कन्वर्ट करें, प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो पास्ट कंटिन्यूस में कन्वर्ट करें, प्रेजेंट परफेक्ट है तो आपने उसको पास्ट परफेक्ट में कंटिन्यूस करना है, एंड इफ इट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस तो आपने उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करना है। तो प्रेजेंट के लिए तो दिस इज सिंपल, but as far as past, the categories of past tenses are concerned, तो उसमें जो सिंपल पास्ट होता है, okay, the simple past is converted into past perfect. These are the things that you have to be pay attention to. कि जब आपको सिंपल पास्ट नजर आएगा तो आपने उसको क्या करना है, आपने उसको पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करना है, सच काइंड ऑफ वर्ड। आगे आपको मैं एग्जांपल में करवाऊंगी, फिलहाल आप सिर्फ इन रूल्स को माइंड में बिठाने की कोशिश करें। अगर पास्ट कंटिन्यूस आपको नजर आएगा so you will convert it into past perfect continuous. अगर पास्ट परफेक्ट है तो नो चेंज, आपने उसमें कोई चेंज नहीं करना। परफेक्ट है तो उसको परफेक्ट ही रहने देना है, एंड इफ इट इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस तो आपने उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस ही रहने देना है। सो जिस तरह मैंने आपको बताया कि अगर प्रेजेंट है तो उसमें चेंजेस हो जाती है, सारे जितने भी प्रेजेंट है, वेदर इट्स सिंपल, इट्स कंटिन्यूस, इट्स परफेक्ट कंटिन्यूस, आपने उन सब को पास्ट में कन्वर्ट कर देना है। लेकिन अगर हम पास्ट टेंस की 4 कैटेगरीज को देखें तो उसमें 2 कैटेगरीज है जिसमें आपने चेंजेस करनी है, और रिमेनिंग 2 कैटेगरीज दैट इज इन्वॉल्विंग द परफेक्ट टर्म, whether it's past perfect or past perfect continuous। perfect को आपने चेंज नहीं करना, उसको एज इट इज रहना है, और अगर सिंपल पास्ट है या पास्ट कंटिन्यूस है तो आपने उसको पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करना है। ओके, और जहां तक हमारे पास फ्यूचर टेंसेस वाली बात है तो उसमें भी कोई आपने चेंजेस नहीं करनी। इंस्टेड वन चेंज, आपने उसमें सिर्फ एक ही चेंज करना है कि जब आपको विल नजर आएगा व्हिच मींस दैट इज द फ्यूचर टेंस, आपने विल को वुड में चेंज करना है, दैट्स इट। बाकी आपने वर्ब के साथ या वर्ब के साथ कोई चेंजेस नहीं करनी, जस्ट यू आर गोइंग टू चेंज विल इनटू वुड। तो ये है कि आपके इससे आपको आइडिया हो गया होगा कि आपने कौन सी टेंसेस को चेंज करना है और कौन सी टेंसेस को आपने चेंज नहीं करना। जितनी प्रेजेंट टेंसेस हैं और जो उसकी सब कैटेगरीज है सब चेंज होगी। जहाँ तक पास्ट टेंस की बात है तो उसमें 2 कैटेगरीज को आप चेंज करते हो और 2 कैटेगरीज को आप चेंज नहीं करते, यू लाइक they stay as it is in the indirect speech। और फ्यूचर टेंस को भी आप चेंज नहीं करते, जस्ट आपने विल को वुड में चेंज करना है, एंड दैट्स इट। Look at the examples here. These all examples they will be containing verbs that are in present tense. So the first example is they said they take a walk every day. अब ये क्या है, ये they take a walk every day, this is simple present, take is a simple present, ठीक है। एक simple present है तो आपने इसको कैसे कन्वर्ट करना है बताया, आपने इसको कन्वर्ट कर देना है सिंपल पास्ट में, with the simple present into simple past। बाकी जो pronoun में changes है you will do them accordingly, but here my major concern is with the tense। so आपने simple present को simple past में convert करना है। so how you are going to do it? They said that they took a walk every day, so here the take is converted to took, simple past has been changed into simple present has been changed into simple past। so this is how you are going to change the speech, direct speech into indirect speech। Then there is next example where the verb is in the verb is in present continuous, ठीक है, continuous में है।
तो आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस को कैसे चेंज करना है, सिंपली आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस को कर देना है पास्ट कंटिन्यूअस में. सो द एग्जांपल इज दे सेड they are taking a walk every day. सो आपने इसको चेंज करना है लाइक they said as it is आ जाएगा, कॉमास की जगह आप that इंट्रोड्यूस करते हो. So they said that they are will change into past were. So here are taking will change into were taking a walk every day. So this is how you change present continuous into past continuous. Then the next example involves the perfect present perfect have. Have is like have with a have which is followed by the third form of verb have taken. This is how this is the structure of a present perfect sentence. They said they have taken a walk. तो मैंने आपको बताया कि present perfect को आपने simply past perfect में change कर देना है. And how you are going to do it? They said that they had taken a walk. Have को आपने कन्वर्ट कर देना है पास्ट में. टेकन प्रेजेंट परफेक्ट है तो परफेक्ट ही रहेगा. प्रेजेंट परफेक्ट आपने पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है, तो इट मींस परफेक्ट विल बी इम्परफेक्ट. आपने प्रेजेंट को पास्ट में कन्वर्ट कर देना है. सो have will convert into had. So they said that they had taken a walk. Now the fourth example is about the present perfect continuous. That is perfect have been taking. So this is the I'm sure that you know about the tenses. The structure of the present perfect continuous is such that it is have is followed by been, which is further followed by the first form of verb. जिस तरह के आपको example में नजर आ रहा है कि there is have, then there is been, and then there is taking. That is the first form of verb. तो इस तरह की जब आपको sentence structure नजर आते हैं, so that directly indicates that these are the present perfect continuous tenses. तो present perfect continuous को आप कैसे change करते हो? You change present perfect continuous into past perfect continuous. तो sentence कैसे change हो जाएगा? They said that they had been taking a walk since morning. So perfect तो आपको पता है ना, like I told you, present perfect will change into past perfect and present perfect continuous will change into past perfect continuous. तो जहाँ तक परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस वाले टर्म्स है तो वो एज इट इज रहेंगे, जस्ट आपने प्रेजेंट को पास्ट में कन्वर्ट कर देना है. एंड दिस इज हाउ you will convert direct speech into indirect speech, which contain the present tenses, where the verb is in present tense. अच्छा जी. Then moving back to the slides. अच्छा, present के हमने कर लिए हैं. Now let's come towards the sentences जहाँ पे verbs are in past tenses. ठीक है, जो past tense में जितने verbs हैं उनको हम देखते हैं. The first example is they said they took a walk. Now they took a walk is a simple past. ठीक है, एक simple past है. The verb took is indicating the sentence is in simple past tense. So आपने rule, according to the rule, I already told you that when the sentence will include a past tense, तो आपने उसको क्या करना है, आपने उसको कैसे चेंज करना है. मैं दोबारा से मैं रेफर बैक करूँ ताकि आपको क्लियर हो. The past indefinite यानी simple past they will change into past perfect. Simple past will change into past perfect. तो एग्जाम्पल को देखें. फर्स्ट एग्जाम्पल इज ऑफ सिंपल पास्ट. तो जब हमने इसको कन्वर्ट किया है तो ये पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है. और पास्ट परफेक्ट के देर में आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर बताऊं तो इट इज हैड. ठीक है, हैड होगा, दैट विल बी फॉलोड बाय द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. सो लुक एट द एग्जाम्पल. दे सेड दैट दे took will change simple past will took into past perfect. So took will change into had taken a walk. So this is how you are going to convert a past tense. They said that they had taken a walk. तो जहाँ पे आपको सिंपल पास्ट नजर आएगा और आपसे मांगा जाएगा कि आप इसको इस डायरेक्ट स्पीच को आप इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करें, तो आपने क्या करना है कि सिंपल पास्ट को आपने पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देना है. तो क्या किया हमने फर्स्ट सेंटेंस में, हमने ये किया कि हमने सिंपल पास्ट को हमने पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर दिया है इन इनडायरेक्ट स्पीच.
फिर आपके पास दूसरी एग्जांपल है, दैट इज दे सेड दे वर टेकिंग अ वॉक. नाउ दिस इज पास्ट. Word indicates past and taking indicates continuous. So this is past continuous. तो past continuous आपने कैसे convert करना है? Rules क्या कह रहे थे? The rule said that past continuous will change into past perfect continuous. ये जो आपको नजर आ रहा है, the past continuous will change into past perfect continuous. How? कैसे होगा? See, they said they were taking a walk. तो इसको जब हम past perfect continuous पे change करेंगे, so they said that they had been taking a walk. Had represent past, been walking represent perfect continuous. So they said that they had been taking a walk. So this is how we change a past continuous tense into indirect speech by converting the past continuous into past perfect continuous. Now the next example is they said they had taken a walk. आपको जहाँ पे भी had या has या have नजर आता है, ठीक है, have, has या had, जब आपको ये three words sentence में नजर आएंगे, so this indicates the perfection of that sentence कि ये sentence perfect है. अगर आपको have नजर आता है या आपको has नजर आता है, so that indicates present perfect. और अगर आपको had नजर आता है, so that indicates the past perfect. So then now this sentence इधर हमें had नजर आ रहा है, that is followed by the third form of verb, so this is past perfect. तो मैंने आपको बताया कि जब आपको past perfect, आपने past perfect चीज नहीं करना, past perfect will remain past perfect. So they said they had taken a walk. So to convert this sentence into indirect speech, we will say they said that they had taken a walk. Just हमने quotation marks in remove किए और उसकी जगह we have added that, and the rest of the sentence remain as it is. So they said that they had taken a walk. So as far as the past perfect is concerned, you are not going to make any changes to the verb. आपने verb में कोई change नहीं लानी. You have just you can deal with the quotation marks and that's it. अच्छा जी. Now the rules also says that जितनी भी आपके पास future tenses हैं तो उसमें changes सिर्फ और सिर्फ will में change आएगी, बाकी कोई change नहीं आएगा. Only the will change into would. So look at the example here. In future tense, no changes are made except shall and will are changes into would. Either it's or whether it is will or it's would, whether it's will or shall, that is just change into would. ठीक है, would में change हो जाते हैं और बाकी कोई change आपने इसको इसमें कोई changes नहीं करनी. Look at the example. They said they will take a walk. They said they will take a walk. Now will आपने क्या करना है, future tense है, आपने सिर्फ will को would में change करना है और बाकी चीजें आपने वैसी की वैसी ही रखनी है. So how we are going to say this sentence in indirect speech? They said that they would take a walk. Only the will has been changed into would and that's it. कोई और इसमें आपको change नजर नहीं आएगा. So these are the changes in the tense of the verb. जब आपका जहाँ पे कितना वर्ब आपका कंसर्न होता है, आपने देखना है कि वर्ब प्रेजेंट में है, वर्ब पास्ट में है या वर्ब फ्यूचर में है. अगर फ्यूचर में है so that nothing to worry about, just आपने विल को चेंज करना है. अगर पास्ट में है तो आपने देखना है कि अगर पास्ट परफेक्ट में है या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में है तो तब तो आपने कोई चेंजेस नहीं करनी. हाँ, अगर सिंपल पास्ट में है या पास्ट कॉन्टिन्यूस में है तब आपने उसको कन्वर्ट करना है किसमें, परफेक्ट में. सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में और पास्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में आपने चेंज करना है. और जहाँ तक वर्ब्स की बात है, दे आर जो प्रेजेंट टेंस में होते हैं तो आपने हर एक कैटेगरी को अकॉर्डिंगली चेंज करना है. यानी कि सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में कन्वर्ट करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है. And if it is present perfect, so it will change into past perfect. If it's present perfect continuous, so it will change into past perfect continuous. तो ये है कि आपने इन चीजों को क्या करना है, याद रखना है. और ग्रामर की जो मुझे जो बात पसंद है, तो
रूल से ज्यादा आपको एग्जाम्पल्स लॉजिकली वो हो जाता है। फिर जब आप रूल्स को अप्लाई करते हो तो आपको पता चल जाता है कि ओ आई हैव अप्लाइड दिस रूल हियर हियर एंड हियर। ठीक है, तो आपने रूल्स को बेसिकली याद नहीं करना होता, आपने इनको सिर्फ समझना होता है। और फिर जब आप इसको, जैसे कि अगर मैं अभी आपको समझा रही हूँ और आपने इसको समझ लिया है, तो आपके सामने कोई भी एग्जाम्पल आएगा तो आप ऑटोमेटिकली उसको चेंज करोगे। ठीक है, सो यू डोंट नीड टू मेमोराइज देम, जस्ट अगर मैं आपको बता रही हूँ और आपको समझ आ रही है, सो दैट्स अ गुड पॉइंट। अच्छा, तो हमने टेंसेस का तो हमने कर लिया कि टेंसेस को हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करते हैं। देन देयर आर सम जनरल मोर जनरल रूल्स, जहाँ पे अगर सेंटेंसेस है जहाँ पे आपको कैन नजर आएगा, लाइक आई कैन ड्राइव अ कार, so here the can will changes into could, may will change into might, and must will change into had to। ये चीजें आप अपने साथ प्लीज नोट करें, टेक notebook and just note down these points, that can will change into could, may will change into might, and must changes to had to। Example of how can changes to could: he said I can drive a car, he said I can drive a car। So here आपने क्या करना है कि आपने सिर्फ can को could में चेंज करना है, और pronoun को, quotation marks को, बाकी आपने अकॉर्डिंगली जो आपके रूल्स मैंने आपको स्टार्ट में पढ़ाए तो आपने वो रूल्स वैसे ही करने हैं। लेकिन can को आपने क्या करना है, could में चेंज कर देना है। तो कैसे बनेगा ये? he said that, I will change this to he, so he said that he could drive a car, so here can has been changed into could, he said that he could drive a car। Now in the second statement we see that may changes to might, so he said I may buy a computer, he said I may buy a computer। So to change such sentence into indirect speech, the may will changes to might, and then the change in the pronoun as per the conventions। जैसे आपने pronoun को change करना है तो बस आप उसी तरह आप उसको change करें, तो sentence कैसे बन जाएगा? Sentence will be he said that he might, may changes to might, he might buy a computer। ठीक है, ये सिंपल जो कैन, में और मस्ट वाले सेंटेंसेस है तो उसमें सिंपल ये प्रोनाउन की और ये दो चेंजेस होती हैं। मस्ट चेंजेस टू हैड टू। एग्जांपल, he said I must work hard, must, I must work hard, so must changes to had to, so ये क्या बन जाएगा? he said that he had to work hard। सिर्फ मस्ट क्या हो गया? हैड टू में चेंज हो गया है, और प्रोनाउन को आपने ही में चेंज कर दिया है, तो he said that he had to work hard। so ये three words है जो आपने चेंज करना है। if it's can it will changes to could, if it's may it will change to might, and if it's must it will changes to had to। बाकी जो वर्ड्स आपको ब्लॉक में नजर आ रहे हैं जैसे कि would, could, should, might and ought to, अगर आपको ये पांचों वर्ड्स किसी भी सेंटेंसेस में नजर आते हैं, these are all the exceptions, they will remain unchanged। ठीक है, ठीक है। तो ये कैन को तो आपने कुड में चेंज कर दिया है, तो अब आपको अगर कुड नजर आता है तो आपने उसको मजीद चेंज नहीं करना। सो कुड, शुड, वुड, माइट एंड ought to, ये these remains unchanged in a sentence। इस सेंटेंस में आपको ये नजर आए तो आपने उसको चेंज नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये फर्स्ट सेंटेंस को आप देखें कैन वाले एग्जाम्पल में, अगर ये एग्जाम्पल ऐसे होता है कि he said I could drive a car, अगर ये सेंटेंस ऐसे होता he said I could drive a car, तो इसको जब हम चेंज करते तो उस कोड में कैन को तो हमने कोड में चेंज कर दिया, लेकिन अगर ये कैन की जगह कोड होता तो हम उसको चेंज नहीं करते, एंड वी वुड से he said that he could drive a car। फिर हम सिर्फ प्रोनाउन में चेंज लाते, कोटेशन मार्क्स को रिमूव करते, दैट को ऐड करते, लेकिन कुड को हम एज इट इज रहने देते। ठीक है, सो दीस आर द थिंग्स यू नीड टू कीप इन योर माइंड। एक्सेप्शंस को आप लोग जहन में रखा करें, बाकी रूल्स जो होते हैं वो लॉजिकली अप्लाई हो जाते हैं, बट व्हाट यू नीड टू कीप इन योर माइंड आर द एक्सेप्शंस। ऑलराइट, इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस, जब आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है और आपसे मांगा जाता है कि आप इसको चेंज करें डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में, तो उधर थोड़ी सी डिफिकल्टी हो जाती है, लेकिन इफ यू नो अबाउट द बेसिक रूल्स तो आप किसी भी
क्वेश्चन को आप इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हो। नाउ व्हाट आर दोज बेसिक थिंग्स जो डायरेक्ट स्पीच में अगर सेड आया है, ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच में अगर वर्ड सेड इज यूज्ड एंड देन द क्वेश्चन इज आस्क्ड, तो आपने उस सेड को चेंज कर देना है आस्क्ड में और इंक्वायर्ड में, ठीक है। अब इधर जब क्वेश्चन जब रिपोर्टेड स्पीच में जब कॉमा के अंदर आपका क्वेश्चन आता है तो फिर आपकी रिपोर्टिंग स्पीच में भी थोड़ी सी चेंज हो जाती है। सेड या टोल्ड का जो होता है दैट दे आर चेंज इनटू आस्क्ड और इंक्वायर्ड, ठीक है। फुल स्टॉप को आप एंड में रिप्लेस करते हो एक क्वेश्चन मार्क से, और दैट की जगह जिस तरह नॉर्मल सेंटेंसेस में हम दैट यूज करते आ रहे हैं, इन क्वेश्चंस जहाँ क्वेश्चंस होते हैं, फिर आपने क्या करना है, आपने उधर दैट यूज नहीं करना, आपने इफ यूज करना है। Questions where you introduce a new word that is if. So the first thing is you make change in the reporting speech. You change said into asked or inquired. Then you replace the full stop with the question mark, and in the end you use the word if. Introduce the word if in the sentence. Example देखिए, she said, "Do you know me?" She said, "Do you know me?" ठीक है, एक क्वेश्चन है कि क्या आप मुझे जानती है? So here the side will change into asked. She asked. Okay. Then in the normal sentences we are using that, but in the question we are using if instead of that. So she asked if I knew her. ठीक है? So डायरेक्ट स्पीच में आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है तो एक क्वेश्चन मार्क आपको नजर आता है, लेकिन इनडायरेक्ट में when you have introduced the word asked, that is already indicating the question, so then you are not using the question mark, you are just using the simple period, or you are simply using the full stop at the end of the sentence. So style is changed into asked, and the introduction of if, and the change of pronoun. Okay, you is a pronoun, that is the second pronoun that is changed into I, and no, that is changed into the past new, and then again me, another change in the pronoun. So here is how a question is converted into an indirect speech. She asked if I knew her. Okay, she asked if I knew her. So this is how you change a question into a direct question into an indirect question. Examples आप देख सकते हैं. I said to her, "When do you do your homework?" I said to her, "When do you do your homework?" Then आपने उसको उसी तरह रूल्स को अप्लाई करते हुए आपने इसको चेंज करना है. I asked, आपने said will change into asked. ठीक है? I asked her when she did her homework. ठीक है? Then we said to him, "Are you ill?" We asked him if he was ill. You said to me, "Have you read the article?" You asked me if I had read the article. तो आपने इधर क्या करना है, कुछ चेंजेस है जो टेंसेस पे डिपेंड कर रहे हैं, जैसे कि हैव यू रेड द आर्टिकल, सो प्रेजेंट ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो आपने इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया, तो वो हैड रेड बन गया है. देयर इज द इंट्रोडक्शन ऑफ इफ, said has changed into asked, the question mark has replaced by the full stop. तो ये सारे रूल्स आपने क्या करने हैं कि आपने टेंसेस वाले रूल्स याद करने हैं, आपने प्रोनाउंस वाले रूल्स को याद रखना है, आपने दूसरे कौन से रूल्स है, आपने टाइम और प्लेस एक्सप्रेशंस को जो रूल्स है आपने उनको याद रखने हैं, और इसी तरह आप एक सेंटेंस को आप चेंज कर सकते हो. She says, "Who is he?" She says, "Who is he?" So she says who he is, or she asks, एक मिनट. अच्छा, इधर आप देखिए, मैंने आपसे स्टार्ट में एक बात की थी कि इफ द रिपोर्टिंग स्पीच इज इन द प्रेजेंट टेंस, तो आपने उसको चेंज नहीं करना, उसके अंदर जितनी भी आपकी चीजें हैं, वर्ब है, आपने उनको चेंज नहीं करना. तो अगर आप सेकंड लास्ट एग्जांपल में देखें, बाकी सारी तो जहां पे भी रिपोर्टिंग स्पीच आपको नजर आ रही है, दैट इज सेड. हाँ, सेड, ये सब में सेड है. लेकिन अगर आप सेकंड लास्ट एग्जांपल में देखो, सो द रिपोर्टिंग स्पीच इज इन प्रेजेंट टेंस. ठीक है, प्रेजेंट में है. She says, that is present, तो आपने अंदर चेंजेस नहीं करनी. So it will be as it is. She says who he is.
जस्ट आपने कॉमास और कोटेशन मार्क्स को रिमूव किया है और आपने उसको एज इट इज लिख दिया है। Rashid said to me, "Why are you late?" Rashid asked me why I was late. So this is how you convert questions into into indirect speech. जहाँ पे आपको if की जरूरत फील होती है, you can use the if. जहाँ पर आपको लगता है कि if use नहीं होता, you can simply skip it. टेंसेस को आपने याद रखने हैं कि पास्ट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है, कोई फ्यूचर टेंस है, कोई कंटिन्यूअस टेंस है। तो आपने कुछ चीज़ों को भी, जिस तरह मैंने आपसे पहले डिस्कस किया, आपने सब चीज़ों को माइंड में रखना है और ये तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। ओनली अ प्रैक्टिस कैन मेक मैन परफेक्ट। ठीक है, तो ग्रामर को मास्टर करने के लिए आपने क्या करना है, दैट इज जस्ट प्रैक्टिस। दैट्स द ओनली वे टू मास्टर द ग्रामर। इसके अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है ग्रामर सीखने के लिए। एनीवेज, अगर इंपेरेटिव सेंटेंसेस की हम बात करें तो आपको पता है कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। दे आर द सेंटेंसेस व्हिच एक्सप्रेसेस ऑर्डर्स एंड कमांड्स एंड एडवाइसेस। जिस सेंटेंसेस में ऑर्डर्स, कमांड्स और एडवाइसेस होती है, सो वी कॉल दोस सेंटेंसेस एज इंपेरेटिव सेंटेंसेस। अब इंपेरेटिव सेंटेंसेस में आपने कैसे चेंजेस करने हैं, आपने इंपेरेटिव सेंटेंस के सेट को चेंज करना है इनटू टेल, रिक्वेस्ट, सजेशन, परमिट, आस्क, एडवाइस, वार्न, रिमाइंड, फोर्स। सेंस ऑफ सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि सेंस ऑफ सेंटेंस क्या है। इधर इट्स अ कमांड है, कोई ऑर्डर है, कोई एडवाइस है, कोई सजेशन है। तो आपने उस सेंटेंस पे डिपेंड करना है कि उसका मोड क्या है। फिर आपने उस बेसिस पे आपने रिपोर्टिंग स्पीच का जो सेट होता है, लाइक शी सेड, आपने उस बेसिस पे सेट को चेंज करना है। लाइक द फर्स्ट एग्जांपल इज शी सेड गेट आउट ऑफ माय वे। She said, "Get out of my way." So you can simply say, "She told me to get out of her way." आपने सिंपली इसको चेंज कर देना है। और अगर आप इसको एक ऑर्डर के सेंस में लेना चाहते हो, गेट आउट ऑफ माय वे, अगर आप ऑर्डर तो खैर नहीं है, लेकिन अगर आप इसको ऑर्डर के सेंस में लेना चाहो तो यू कैन चेंज इट अकॉर्डिंग टू दैट। यू कैन से, शी ऑर्डर्ड मी टू गेट आउट ऑफ हर वे। ठीक है, तो आप इसको ऐसे चेंज करते हो। इंपेरेटिव सेंटेंसेस के आपने देखना है कि ऑर्डर हो रहा है या कमांड है या कोई एडवाइस है, कोई सजेशन है। तो उनको पे डिपेंड करता है कि आप रिपोर्टिंग स्पीच का जो सेट होता है आपने उसको किस में चेंज करना है। We said to him, these are the examples of imperative sentences. ठीक है, सारे imperative sentences के examples हैं। We said to him, mind your own business. Now to change this sentence into indirect speech, इसके हमने मोड को देखा, it's like mind, like we are urging him to mind your own business. ठीक है, so we can say that we urged him to mind his own business. So here we have replaced the word said to with urged according to the sentence. The next example is, she said to him, consult a doctor. She said to him, consult. Now she is suggesting him to consult. ठीक है, एक उसको एक मशवरा दे रही है कि to consult a doctor. So we can say that she suggested him to consult a doctor. ठीक है. Now in the next example, he asked me, write it again. So like here someone is asking someone to do something. So here we can say that he asked me to write it again. Next example, you said to your father, please grant him leave for some time. Look at the word please. Please क्या show करता है? Please request को show करता है. So you said to your father, so we can say you requested your father to grant him. अब requested please is showing the request. So requested का word अगर हमने introduce कर दिया है, so now we don't need the word please here. Please की अब हमें जरूरत नहीं है because we are already using the word requested. So we can say you requested your father to grant him leave for some time. And the last example is, my mother said to me, never tell a lie. My mother said to me, never tell a lie. So you can say my mother forbade me to tell a lie. थोड़ा सा complicated है आपके लेवल पे, this is not a complicated, लेकिन आप इसको एक और सेंस में भी चेंज कर सकते हो, like my mother said to me never tell a lie. So ये एक एडवाइस है, ठीक है, एक पीस ऑफ एडवाइस है जो मदर अपने बच्चे को दे रही है कि आपने झूठ नहीं बोलना. So you can say my mother advised me not to tell a lie. तो
तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बट मोर अप्रोप्रिएटली ये ज्यादा सूट करता है कि यू से माय मदर फॉरबेड मी टू टेल अ लाई, कि मेरी मदर ने मुझे झूठ बोलने से मना किया।